So today's lecture will be all about community pharmacy management. As we have discussed earlier, it is all about the management which you are talking over here. Okay, हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, ये कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट है. तो इस कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट में बेसिकली हमें ये समझना है कि हाउ द फार्मासिस्ट विल मैनेज ऑल द एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग द कम्युनिटी फार्मेसी. But till now we have studied the legal requirements and we have sought some of the information. We have just put some light on over the what is community pharmacy, how it has been established, what are the requirement, what are the record, right? But here we are going to talk about all the management which has to be done. Based on your syllabus, if you see, if you have syllabus with you right now, you can just see the points which they have included in this. That is financial, material, staff, and infrastructures requirement and their management. So that is all the aspects which I have included in this lecture. Let us understand what is the best thing which we can come out after completing this lecture. So starting with this, what is community pharmacy? Again, we will recall the definition. So it's a pharmacy center established in a community setup, catering to the needs of society for the drug products, healthcare, and related material. So community pharmacy unit is also known as a retail or a medical store or simply a drug store that we all know. Okay. So community pharmacy management represents all the activities. What are the activities which we involve in this management? That is organization, direction of the people, hiring the people together to accomplish the desired goal of that particular organization and the objectives of that particular pharmacy enterprises. So whatever you manage, if you are having a hospital, if you have any business setup, so all you manage, you have some goals, right? Your organization, your firm might be having some goals which you want to achieve in that particular year or in 5 or 10 year of tenure, whatever it may be. So in the same way, community pharmacy management is all involving of all the organization and directions for the people who are involved or working in that organizations to achieve the desired goal, okay, or to achieve the objectives which is laid down by the pharmacy enterpriser. So that is all about the management, and that is all about we are going to talk over here today itself. Okay. So this is community pharmacy and its management. So as I told you, the community pharmacy management has as aspect we can categorize them in a terms of financial management. We can categorize them in another one that is material management. Then we have staff management, and at last but not least, we have infrastructure management. So that is are the four pillars which act as an important aspect in terms of a community pharmacy management. So starting with financial management. सो व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑल नो कि सबको अगर आप पूछेंगे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब यही होता है कि पैसा पैसा जुए छे पैसा होगा तो हम काम कर सकते हैं पर पैसा होने के बावजूद भी आपको बहुत सारी चीज़ें संभालनी होती है अगर आपके पापा का अगर कोई भी चीज़ जैसे है जैसे कि फार्मेसी की स्टोर है और अगर आपके फाइनेंशियल आप चीज़ें देख रही हो अगर आपके पास कोई फर्म है तो उसके अगर आपके पास रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं तो you can just understand कि financial situations having money is not an everything, right? You need to maintain everything, records, the bill, the payment, the profit, and the loss. So that is all about the financial. So let us understand. Financial management involves capital investment, which is expenditure made during a particular period to acquire or improve the long-term assets such as building, a delivery van or delivery vehicle, whatever suitable one, a dispensing equipment, and it is necessary for paying the bills, making changes, paying employees, making any financial transaction in which the pharmacy is involved. So this involves this everything from buying to selling. Okay, wherever you have money, wherever your money term has been used, that all comes under the financial management. ऐसा नहीं है अगर आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट अर्ली ऑन में कर दिया तो आपको ऐसा लगेगा कि बाद में भी आप बस वही अपने मैनेज कर लिया तो हो गया ऐसा नहीं आपको सब कुछ ध्यान रखना है बाइंग से लेके सेलिंग से लेके प्रॉफिट से लेके लॉस से लेके पेमेंट से लेके सारी चीज़ें so that comes under the financial management. So let us understand in more detail. So what is the importance of financial management? Why do you need to do the financial management? So it helps in the successful development of the business. That is the first point which we can understand over here. It helps you in the successful development of your business. So whatever business you are doing, you need to have a successful development. For development, you need to maintain a good financial thing. Okay. It helps in you the forecast of the future funds. If you want to develop it more, you need funds. If you save or you make plans which create a lot of funds, so you can forecast your future, what you can do in future. Okay, either you can grow your organization in a big manner, or you can set up many other firms from the funds which has been saved by you from this particular firm. Okay.
So gives an efficient direction of business. Okay, it helps in making economic in various operating activities. Uh, ineffective financial planning, financial manager makes owner and credit capital safe, make you secure by investing it in a well businesses. So financial plan, simple, flexible, economical, implemented, uses financial source, fully good source of information, prepared as a less risky business. Okay, so that is all about we are talking over here. This is the importance of financial management. Okay, so financial management, if you're talking, if you have a sound knowledge of the business, you can understand when you have to invest the money, in which product you have to invest the money. For example, we are having the COVID situation. It is but seen that you need to invest the money in sanitizer, since you knew that sanitizer is going to go, it is going to get sale. Okay, you need to invest the money to keep a stock of masks. So these are all the products which you feel, so based on the knowledge of the market, you can keep a stock of these all materials and you can have a good business, right? So that is all about, if you have a if a good knowledge with a good source of income, you can have a very good business with a less risk. So that is what we are talking in the last this point. Okay, so that is importance of the financial management. Then how you need to manage the financial terms. Okay, आप कैसे परचेज करेंगे, कैसे रिकॉर्ड रखेंगे. तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि फाइनेंशियल के बारे में बात हो गई, इंपॉर्टेंट सर ने बता दिया बस, लेकिन कैसे करना है वो नहीं बताया है. तो उसके बारे में आपको सोचना नहीं है. आपका 5th चैप्टर जो है, अगर आप देख सकते हैं आपके सिलेबस में, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्री कंट्रोल करके एक चैप्टर है. तो उसके बारे में हम जब डिस्कस करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें वो आ जाएगी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में, क्योंकि उसमें सारे पॉइंट्स वही दिए हुए हैं जो हम उस टाइम पर हम डिटेल फॉर्म में उसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. तब हम उसे थोड़ी डीप वे में मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता. तो इंश्योर यू शुड नॉट गेट बोर्ड, सो आई हैव शॉर्टनड इट. ओके, सो आप वो चीज़ देख सकते हैं. हम बाद में उस बारे में डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल कैसे मैनेज करना है. ठीक है, कैसे मैनेज करने के टर्म्स मतलब व्हाट आर द मेथड्स. ओके, देन वी हैव मटेरियल्स. Materials is the another pillar which you need to manage, right? So material manage can be defined as the function responsible for the coordinating of planning, sourcing, purchasing, moving, storing, and controlling the materials in an optimum manner to provide a pre-decided service to a customer at a minimum cost. Okay? You need to plan, you need to have a source, you need to purchase the things, you need to move the things, it means transportation, you need to store the things, and you need to control materials, and so controlling the material supply in a such a way to provide a pre-decided services to any of the customer at a minimum cost. आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे 1 महीने से स्टोर करके रखा हुआ है तो मैं कस्टमर से 2 रुपये ज़्यादा लूँगा. कुछ लोग होते हैं स्टोर करके रखते हैं फ्रिज में, तो बोलते हैं कि फ्रिज का 1 रुपया 2 रुपये आपको ज़्यादा लगेगा. मैंने ये चीज़ देखी है. सो दैट इज़ नॉट एन पॉइंट विच यू शुड ऐड टू द कस्टमर्स पॉकेट, राइट. सो दिस इज़ मटेरियल मैनेजमेंट. तो आपको पहले से ही सोर्स दिमाग लगाना पड़ता है कि आपको किस तरीके से स्टॉक करना है, क्योंकि फ्यूचर वर्डिक में आपके प्री डिसाइडेड आपको ये सर्विस देनी है, आपको ये सेल करना है. तो आपको पहले से ही उसके मटेरियल्स के रिलेटेड स्टॉकिंग, सोर्सिंग, परचेसिंग सारे चीज़ों पर ध्यान देना होता है. ठीक है. सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर मटेरियल मैनेजमेंट, व्हाई यू नीड टू डू, यू मेंटेन एन इन्वेंट्री मटेरियल फॉर योर वर्किंग कैपिटल. जो भी इन्वेंट्री मटेरियल्स आप रखते हो, इन्वेंट्री के बारे में हम लोग उस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो जस्ट टू अंडरस्टैंड, इट इज़ ऑल अबाउट बाइंग एंड सेलिंग. Okay, buying like a beggar, selling like a business. Okay, you should buy it in a very cheap cost and you sell like a businessman. Okay, that is all about the inventory materials. तो अगर आपको PCM कोई एक जगह से मिल रही है, कहीं पर 2 रुपये की मिल रही है, कहीं पर 2.5 रुपये की मिल रही है, तो it is all about having a good quality and purchasing it in a low price and selling it in a good price where you can earn incomes, right? So to maintain inventory material for maintaining the working capital, जो भी working assets आपने रखे हैं उसकी rotations हों. Then to purchase the material at minimum prices that we have discussed. To establish a good vendor-customer relationship. This is a very important one. Okay, you need to maintain a good relationship, then you have to keep a various stocks of the material. Okay, then to establish an integrated system for reducing the duplication of the function. Okay, you have to ensure a system in such a way कि अगर आपने ये चीज़ यहाँ से ले ली तो duplications ना हो, function ऐसे integrated होने चाहिए कि कहीं पर error ना हो, ताकि आपने जो ये flow chart बना के रखी हुई है वो properly maintain रहे. Okay, then to achieve optimum inventory turnover. Whenever you have a business, all the person will talk about one term, that is आपका turnover कितना है.
Again, the same things apply to our community pharmacy. The turnover, how much turnover do you have? ठीक है? So that is are all the objectives of the material management. Then to achieve the best customer services, ड्रग स्टोर है आपका, कम्युनिटी फार्मासिस्ट हो आप, आपका बिजनेस आपके कस्टमर सर्विस पर डिपेंड करता है, जितना अच्छा सर्विस देंगे उतना अच्छा स्टोर चलेगा, ठीक है? आफ्टर ऑल इट इज ऑल डिपेंडिंग ऑन यू ऑल, सो यू नीड टू अचीव अ बेस्ट टू गिव अ कस्टमर सर्विसेज. Then to search a new source of supply, standardization and quality control. अचानक से कभी भी कोई मार्केट में बूम आ जाता है, कभी मास्क का बूम आता है, कभी सैनिटाइज़र का बूम आता है, कभी कोई पर्टिकुलर मेडिकेशन का बूम आता है, कोई एंटीबायोटिक का बूम आता है. तो अगर आपकी सप्लाई वहाँ से रुक गई है या कंपनी बैन हो गई है या कंपनी में वो स्टॉक अवेलेबल नहीं है, यू नीड टू फाइंड द सोर्स एंड यू नीड टू फाइंड इट इन अ वेरी गुड, द प्रोडक्ट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी and with the price which you already sold in your particular store. Then to process a plan and ensure performance. Okay, so that is all the material management. So faster turnover, if you do these things, selection of raw material, increases the personal development of staff, establish interdepartmental cooperation, reduces material obsolescence and reduces the lead time. So when you do proper planning or material manage, you have these types of aspects. This types of aspect is achieved. ठीक है, कंपनी में जनरली देखना क्या कि डायरेक्ट को पूछना, अगर स्टॉक नहीं रहेगा तो वो प्रोडक्शन रुक जाती है. तो अगर स्टोर कीपर और प्रोडक्शन यूनिट के बीच में लिंकअप नहीं होगा तो ये दोनों के बीच में झगड़ा होगा तो कंपनी को ही लॉस होने वाला है. तो कंपनी ये सारी चीज़ें नहीं दिखेगी. सो मटेरियल मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें रिकवर होती हैं. तो आप इस तरीके से रख सकते हैं. तो इंटर रिलेशन इज ऑलवेज गुड. सो बिजनेस भी अच्छा रहता है. अगर इंटर एम्प्लॉयज़ ही लड़ते रहेंगे तो बिजनेस कभी अच्छा नहीं होने वाला. सो फॉर दैट यू नीड टू मेंटेन द material and management. Okay, then coming to the next pillar, that is staff, one of the important aspect. पैसे आ गए आपके पास, आपको मटेरियल कैसे मैनेज करना है वो सीख लिया. अब ये सारे मैनेज करने के लिए आपको मैन चाहिए, लेबर पावर. ओके, सो दैट वी टर्म एज अ स्टाफ. So what is staff management? The process of hiring, developing the required personnel to fill in various positions in the organization. So it involves the scientific systemic procurement, procure करना, allocate करना, utilization, conversation and development of the human resources. So that is all about the staff management. How you are going to procure the person, how you are going to allocate the department, how you are going to utilize your manpower, how you are going to develop the human resources. So with respect to their skills, so they can maintain and they can make sure the work is properly is going on in that store. So that is all about we are talking over here. So the main objective of staffing is to ensure the optimum utilization of human as well as to provide a personal and social satisfaction to the employee. आपको पैसे दोगे, आप इज्जत से बात नहीं करोगे, उसको रेस्पेक्ट नहीं दोगे तो वो चीज़ें भी नहीं चलेगी. अच्छे से बात करोगे, पैसे नहीं दोगे तो भी नहीं चलेगा. तो आपको पर्सनल ऑब्जेक्टिव सोशल सेटिस्फैक्शन उस एम्प्लॉय का होना चाहिए, इंश्योरिंग आपका यूटिलाइजेशन भी होना चाहिए और वो स्किल्ड पर्सन होना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. ये जब आप कोई कम्युनिटी स्टोर में रहोगे तब आपको समझ आएगा कि किस तरीके से किस पर्सन को लेना है, किस तरीके से हायर करना है, कैसे रखना है, कैसे रोटेशन करना है. सो दैट इज ऑल अबाउट द स्टाफ मैनेजमेंट. नाउ द स्टाफ मैनेजमेंट, you need the main objective is to provide and satisfaction. Then management requires a proper adequate amount of wages according to their work burden, promotion of the post, staff friendly environment, training and seminar for proper dispensing, storage and handling of the prescription, and further allocation of duties and responsibility. So ये point repeated है तो मैं ये point से discuss कर रहा हूँ. तो you need to provide adequate wages, you need to have different post promotion if they are doing good, if they are giving you good business. The staff environment should be always friendly. झगड़ा करते रहेंगे तो आपके business में problem होता रहेगा. You need to train them, you need to give them attend seminars कि वो सारी इन सारी चीज़ों पर काम कर सके, dispensing, storage, handling of prescription, and you need to allocate the duties and responsibility to them. So that is all comes into the staff management. Okay, so ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. Then who are the staffs who are going to work in this community pharmacy? Okay, हमने अभी इन जनरली बात कर लिया, ये सारे पॉइंट्स जो थे इन जनरल थे, लेकिन अब इन थोड़े पेक्युलर बात करते हैं. You have administrative staff, you have other staffs, you have cleaner, you have accountant, you have pharmacist, assistant pharmacist and storekeeper.
These are all the staffs which together work in one head, that is community pharmacy. Okay, so what is the role of these all staff? We know. For example, if you're talking about the role and duties of administrator, let us start with administrator. This is the head of organization which hires the other staff as well as governing body of pharmacy. This includes a group of personnel or owned by oneself which is capable to guide and make appropriate decision for enhancement of better care to the people. This usually remains on the top of the organization. That we all know that institute is one of the important one which is working on the resources of money, capitals and all. So if they have to take a decision, they take a decision in the welfare of the management. So we have some people who is working in this administrative and taking care of the employees as well as the capitals. Okay. So administration staff, then we have pharmacists that we all know about, need to direct, need to maintain. He is acting as a backbone of community. He is usually oriented to the patient's care, direct interaction with them. So we need to have a staff with a qualified degree, master degree or bachelor degree who is capable to do this particular work as a pharmacist. So that is the one. We know the roles and duties of pharmacist. I won't discuss over here. We will just discuss it in a short form like rational use of medicines, patient counseling, supervising the monitor and care provider like nurse, okay, dealing with drug interaction. Then we have, if he is a supervisor, is a senior pharmacist, then he has to correlate with the assistant pharmacist, okay. He need to make aware about all the interactions or ADR. If any is suffering from penicillin ADR, then he has to take care of that. He has to take care of any antibiotic resistant is seen in the patient. Has to train as assistant pharmacist. Then we have various awareness program. कभी कभी समाज सेवा लोग करते हैं, सोशल सर्विस करते हैं, तो अवेयरनेस प्रोग्राम करके आपकी कम्युनिकेबल डिजीज उसके बारे में आपको अवेयरनेस देना चाहिए. सो दैट इज ऑल द रोल एंड ड्यूटीज ऑफ द फार्मासिस्ट, क्योंकि ये कम्युनिटी फार्मासिस्ट है. सो इनका रोल बनता है अवेयरनेस प्रोग्राम करना. हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे. ठीक है. सो अगर आप अवेयरनेस प्रोग्राम करते हो तो इट जस्ट लाइक अ मार्केट में आप अपने आप को एडवर्टाइज कर रहे हो और उस तरीके से आप गुड बिजनेस इंश्योर कर सकते हो. सो इट्स अ वे, अवेयरनेस भी करें और बिजनेस भी करें. ओके. सो दैट इज कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट. The role and duty of assistant pharmacist. Senior pharmacist के बाद assistant pharmacist, he will obey the pharmacist. Assistant pharmacists are generally are having the qualification of diploma level. He will obey the pharmacist. He will keep the record of prescription. He will dispense the medicaments and he will give the proper counseling based on the duration, frequency and time. If you know, you have stickers in the medicals, right? मेडिकल में जनरली स्टिकर कोई भी XYZ मेडिकल स्टोर लिखा होता है और उस पर सवारे बपोरे रात्रे सांझे करके लिखा होता है ना. आपको बताते हैं कि बपोरे ले जाओ ने सांझे ले जाओ, खावा पहला ने खावा पची. ये स्टिकर तो मैंने देखा ही है. ठीक है. तो वो सारी चीज़ें इंश्योर करना. देन कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ द नारकोटिक ड्रग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. यू नीड टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ दीज नारकोटिक ड्रग्स सिंस यू नो व्हाई यू नीड टू कीप इट. ओके. कंट्रोल ड्रग्स है तो आप इस तरीके से डिस्पेंस नहीं कर सकते. यू नीड टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ द नारकोटिक ड्रग्स एज वेल. ओके. सो दैट इज ऑल द रोल ऑफ द assistant pharmacist who having the qualification of the diploma level. So अगर आपने बी फार्म कर लिया तो कंग्रेचुलेशंस, आप सीनियर फार्मासिस्ट होंगे. ठीक है. डिप्लोमा नहीं कर रहे हो, बी फार्म कर रहे हो तो सीधा आप सीनियर फार्मासिस्ट ही रहेंगे. सो यू नीड टू मैनेज दिस ऑल थिंग. देन we have staff. In staff we have accountant. What is the role of accountant? We all know he is just keeping the all records of account section of the pharmacy. Okay. He has to be or she has to be qualified bachelor, master, diploma level of relevant field with some working experience. So she or he can keep a record of the account sections of that particular pharmacy store. Okay. Then we have the storekeeper who is keeping the store and the necessary information of the stock of the medicine. And he should let you know कि ये स्टॉक खत्म हो रहा है, ये स्टॉक खत्म हो रहा है, किस तरीके से खत्म होगा, हमें उसे रिफिल करना है ना. ऑल्सो दैट इज ऑल द वर्क ऑफ स्टोर कीपर. और इंश्योर भी ये करना है कि द स्टोरिंग कंडीशन विच हैज़ बीन लेबल्ड ऑन दैट पर्टिकुलर ड्रग्स और प्रोडक्ट हैज़ टू बी फॉलोड बाय द स्टोर कीपर इटसेल्फ. ठीक है. स्टोर कीपर के पास सब चीज़ें आ गई, अगर 10 टैबलेट्स आ गई या 10 बॉक्स आ गया कोई एंटीबायोटिक का, तो उसको इंश्योर करना है कि 10 आ गया और 10 किस किस के पास गया. ये सारे रिकॉर्ड्स ये स्टोर कीपर को रखने हैं. ठीक है. हर एक कंपनी में कोई ना कोई में स्टोर कीपर होता है और वो स्टोर कीपर का काम यही होता है कि परचेसिंग करना, स्टॉक रखना और उसको
रिक्वायर्ड डिपार्टमेंट्स में अपने हिसाब से स्टॉक मेंटेन, रिकॉर्ड मेंटेन करके उस सारी चीज़ें डिस्पेंस करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना. ओके. देन we have a cleaner. I think I should not go more detailed in cleaner. We know the cleaner purpose of the cleaner, but yes, he should be literate. अगर उसे कुछ लगे या कोई बॉटल ब्रेक हो गई है या स्टॉक प्रॉपर स्टोरिंग प्रॉपर नहीं है या कुछ ऐसे एक्सपायर्ड ड्रग्स हैं यहाँ पड़ी है, तो ही शुड बी एटलीस्ट एजुकेटेड वन, सो ही कैन एटलीस्ट रीड एंड जी कैन जस्ट लेट नो द हायर अथॉरिटीज़ कि इस तरीके की चीज़ें एंड प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं. सो ही शुड बी लिटरेट, दैट विल बी गुड. बट लिटरेट रहेगा तो आपके स्टोर में तो काम नहीं करेगा, एज फार एज आई फील. सो यू नीड टू इंश्योर दैट कि एटलीस्ट 10th हो, 9th हो, कि जो पढ़ सके और आपको बता सके कि ये चीज़ें नज़र आ रही हैं. ठीक है. देन कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट पिलर of our community pharmacy management, that is infrastructure. As we have discussed earlier about this topic in community pharmacy, we will just go superficially. You need to select a good site, right? If you don't have a good site, then no customers will be attracted towards your pharmacy store. So congestion नहीं होना चाहिए, traffic नहीं होना चाहिए, sufficient plot होना चाहिए parking के लिए and all that we have discussed. So selection of site should be always appropriate. If you don't have a good site, then nobody is going to come, because nobody can park in road, right? So they need to have a facility which can provide to the customer. So you should need to select a good site. Then you should have a good layout of the store. It should be appealable. It should be flexible. It should have a good protection, proliferation of material. It should have a better stock control, routine work like record and maintenance. Items should be sparingly and should be easily locatable. ओके. तो इस तरीके का लेआउट ऑफ स्टोर होना चाहिए. लेआउट ऑफ स्टोर के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था अर्लियर लेक्चर में, तो वी वोंट गो इन डिटेल, बट इट इज़ द फ्लो शुड बी इजी. स्टोरिंग आपके एक जगह होना चाहिए, प्रोक्योरमेंट एक जगह होना चाहिए, सारी चीज़ें इस तरीके से होनी चाहिए, लेबल्ड होनी चाहिए, जिससे आप स्टोर भी अच्छे से कर सको और डिस्पेंस भी अच्छे से कर सको, ईजिली लोकेटेबल कर सको. सो दैट इज़ ऑल अबाउट द लेआउट ऑफ स्टोर. देन this is all again the same thing: safety hazards, efficient lights and height to maintain floor space, ventilation, heavy bulk items, shelves and bin, dustbin, minimum handling and transportation of material, then proper security management so that no person or other store staff can enter the store. So these are all the things which has to be considered while the layout of your drugstore. Okay, you can just read it once, nothing new over here. Then what is the objectives? It should be always attract the maximum customer. It should increase the purchase from each customer. जगह नहीं रहेंगे तो कस्टमर खड़े नहीं रहेंगे. ठीक है. आपको कोई उसको आप कुछ अच्छा काम ऐसा नहीं कर रहे कि जैसे आप लोग के पास ही आकर लेकर जाएं दवा. सो एरिया अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए, जिससे कस्टमर इजीली परचेज कर सके. प्रोफेशनल इमेज होना चाहिए. यू शुड वेयर एप्रॉन विच इज़ इंडिकेटिंग अ फार्मासिस्ट. ओके. जो भी जगह है उसकी यूटिलाइजेशन फुलफिल होनी चाहिए अच्छे से. Reduce the theft and pilferage and surveillance should be there. Then to control the movement inside the store and outside the store as well. Okay. So that type of infrastructure you should have when you're talking about the community pharmacy. Then these are all the storage conditions. You need these temperatures, different temperature like 2 to 8 degree, 8 to 25, room temperature warm, excess above heat above 40, then 15 to 30, generally 40 होता नहीं है, ठीक है. 15 to 30 control room temperature, freezer, extreme heat above 40, like you have a dry place which is having a 40% average relative humidity. So you have various products which are having these any of these storage conditions. तो इस तरीके के स्टोरेज कंडीशंस में आपको स्टोर करने के लिए अप्रोप्रिएट कंडीशनड एरिया होना चाहिए, जहाँ पर वो ड्रग इंजेक्शन वायल या ड्रग प्रोडक्ट जो भी आपको इस कोई स्टोरेज कंडीशंस दिया हुआ है उसमें आप स्टोर कर सकें. सो दैट इज़ योर इट कम्स अंडर अगेन द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी टू स्टोर योर different products having the different storage condition requirement. Then physical facilities like administrative office, bulk storage, narcotic drug locker, as we have discussed earlier. Manufacturing repacking, that we don't have. IV solution compounding, that also we don't have, it is not required. Inpatient dispensing, outpatient dispensing, that we have discussed. Then medicine information resource center, this is an important one, this is a new one. If any of the patient wants to have information, तो जैसे रिजर्वेशन की
कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको पता है ना, रेलवे में इन्फॉर्मेशन सेंटर होता है, तो इन्फॉर्मेशन सेंटर ही आप टिकट वाले को पूछोगे तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, बोलेगा कि बाजू वाले काउंटर में जाओ ऐसा. In the same manner, you can set up one counter or center area where you can give information related to the medicine. This is one important aspect which can increase your business. So medicine information center आप रख करके आप दे सकते हो और लोगों को मदद कर सकते हैं. Then emergency medicine storage. Okay? Emergency situations पे जो भी चाहिए वो medicine की storage के लिए appropriate area. Okay? So last but not least, these are all the references from where I have incorporated these all points. So hopefully, I think if you go through this PPT, it will be sufficient to write answers to the questions which will be asked from this particular topic. Okay? So hopefully, I think you have understood. It was just a superficial lecture on community pharmacy management. Hope you all understood it.